उसके बाद में मैं कुछ कहूँगा और उसके बाद आपके हम सवाल जवाब देंगे। अभिषेक सिंघवी जी। Thank you. So friends, as usual in Hindi and English, it'll take some time, so please be patient. I'll be doing in both languages, and your colleagues should not be affected in any one language. Friends, the issue before us is political even before legal. Both facets are important, but it's a vital political issue for this country, for all political parties, for leaders of all political parties. It is a political issue because it signifies the systematic, repetitive emasculation of democratic institutions by the ruling party. It signifies the strangulation of democracy itself. We know that defamation is an exception to free speech. But over the last several years, we have had repeated examples of unthinkable assaults on freedom of speech, more importantly, on freedom after speech. After speech, you are told that you will be visited with the worst possible consequences, be it criminal, be it civil, be it incarceration, be it intimidation, be it harassment in every sphere of your life. We all know that Shri Rahul Gandhi has been speaking out fearlessly inside and outside Parliament. He has spoken on social issues, on economic issues, on political issues, without any fear or inhibition, frankly and candidly, through you to India. Clearly, he is paying a price for it. Clearly, this government is rattled because he speaks with facts, figures on demonetization, be it on a supposed clean chit to China, be it on GST. He is consistently aggressive and open in his questioning. And therefore, this government is doing all these, finding new techniques of throttling his voice, of gagging him. Shri Rahul Gandhi goes abroad. He is not entitled to speak freely on grounds of fake nationalism, created imaginary nationalism, rhetorical nationalism, non-existent issues. He comes back and his speeches abroad become the basis of action against him inside Parliament. He speaks in Parliament, one of the most detailed and open speeches when the Prime Minister spoke, and he is referred to the Privileges Committee. After he came back from abroad and post the recess, when this session starts, a remarkably new ground is found, unheard of in the annals of parliamentary history. The ruling party resorts to disruption every day, saying a precondition for someone to speak in Parliament or attend Parliament is that he must first apologize. I don't think in any parliamentary democracy, Westminster or not Westminster, you have found this kind of stipulation. So disruption by the ruling party. All of this is part of a pattern. All of this is part of a pattern to stop him. A, because he speaks fearlessly and candidly. B, to divert attention from the real issues. To divert attention from the questions which my friend here asks every day. To divert attention from the burning issues before the nation today. And it is done also to send a message to create a fear psychosis amongst those who dare to question this government. Friends, that is the political part. That is what should concern our body polity. There is equally a legal part.
I have shared some of that with you yesterday. Since we've had slightly more time, let me elaborate a little more today. When you hurry, when you are premeditated, when you have decided to do something, you make mistake after mistake after mistake. You multiply mistakes on a repetitive basis. Take for example, the alacrity with which you are moving. Within 24 hours, you are moving with amazing alacrity. I need to remind you that a few months ago, in a case of another political leader from Uttar Pradesh, belonging to the leading party in that state, the Supreme Court, quote unquote, when an immediate by-election was sought to be announced post disqualification of that person because of conviction, immediately, without waiting for that person to exhaust the legal remedies available, the Supreme Court in that case not only deferred the by-election, but then added, look with what alacrity have you proceeded. This is yet another example. But it gets curiouser and curiouser. As I told you yesterday, there is a provision created in law specifically called 202, which says if allegedly I commit a defamatory offence in place X, in this case Kolar, Karnataka, and if somebody chooses to sue me in Gujarat or Bihar, as in this case Surat, then the magistrate before whom a complaint is filed is mandatorily, I repeat, mandatorily obliged to conduct a preliminary inquiry as to whether he has jurisdiction to start and initiate the proceeding. He has to call for a report either himself or through the police or through agencies. To the best of our knowledge, this point is taken by Sri Gandhi's lawyers, noted in the judgment, and not decided. Admittedly, no inquiry is conducted because there is a tearing hurry to go ahead in a place which might well be without any jurisdiction at all, namely Surat, Gujarat. As I said, it gets curiouser and curiouser. I mentioned another example yesterday. I have the dates now. Let me walk you through it. The complaint is filed approximately in April 2019. I think the exact date is April 16, 2019 at Surat. The magistrate is one Mr. Dave. On 2021, Mr. Rahul Gandhi, in 2021 year, 2 years later in June, appears in the court to record his statement in person. Shri Rahul Gandhi appears in that court. In March 22, that is 3 years after the complaint is filed, and 1 year after Shri Rahul Gandhi appeared there, the complainant files an application against someone Rahul Gandhi. When that application is rejected, possibly by a firm magistrate, obviously he had been called, he had come a second time, you cannot harass people to come again and again, he rejects it. At that point, the complainant rushes to the High Court and gets a stay of his own complaint. The High Court grants that stay on 7th of March 2022. So I file a complaint, I seek a stay of my own complaint. Perhaps days are not auspicious, the climate is not ecologically suitable. Now the same complainant, after a hiatus of 11 months, when he has no interest in his own complaint, suddenly wakes up and goes on 16th February this year, seeking a vacation of the same stay which he himself obtained. And I quote, he pleads, and you must all read between the lines. We will of course take all this in the appeal, we have legal records. Quote, he says, sufficient evidence has come on record of the trial court and the pendency of the present matter delays the trial. Pendency of what matter? His own High Court petition. He says he is delaying his own trial. So he says, please vacate. Now the sentence is, though sufficient evidence has come on record, no new evidence has come on record, actually. The High Court
vacates the stay, the man rushes back to the trial court, and we get this judgment. Meanwhile, the magistrate has changed. We were not born yesterday, neither you nor me. Chit bhi apni, pat bhi apni. There are many more disturbing features about this case. There is a point which we may or may not take. I'm not saying that everything Rahul Gandhi needs to take because he's fearless, he knows in his conscience, he has full reliance on the law. But there is a debatable issue. I'm only flagging the issue, which I did not mention yesterday. That though the conviction is by a court, in Rahul Gandhi's case, the disqualification under Article 103 of the Constitution has to be by the President of India. And under 103, the President of India has to first, before disqualifying Sri Rahul Gandhi, take an opinion, a recommendation from the Election Commission. Admittedly, it is not done. In the interest of fairness and completeness, I must let you know also that in a case called Lok Prahari, the Supreme Court has noted the argument of the Election Commission, which says, the Election Commission says, the Supreme Court does not so hold, that we do not need to go to the President with a recommendation because this is a court conviction. The President has no role in a court conviction case. Though this point is noted by the Supreme Court in the Lok Prahari case, it is not decided. The Election Commission, no doubt, has issued circulars saying, in such cases of conviction, we don't need to go to the Honorable President. But my question is a little different. If the Constitutional Article 103 says so, neither the practice of the Election Commission, nor indeed a recordal of a submission of the Election Commission to the Supreme Court, nor indeed a recordal by the Supreme Court can change the Constitution. The highest law of the land is the Constitution. The text of the constitutional article cannot be diluted by a practical approach saying it's a conviction by a court, therefore President is excluded. That is itself a questionable exercise, this immediate issuance today of a disqualification. But we let it be. We are confident that we will get a stay of conviction. A stay of conviction will remove the very basis of this disqualification. This disqualification is nothing but consequential. When the foundation goes, namely the conviction is stayed, the consequences of an illegal foundation will also go. But obviously, as the Election Commission knows, as the Government of India knows, as the BJP knows, it takes time to draft, to file. They are taking advantage of that time, hot-footing it by these disqualification notices. But we have full faith in the law and the majesty of the law, and we believe that we will emerge victorious in the near future. दोस्तों, आज जो मुद्दे आपके समक्ष हैं उनके दो व्यापक आयाम हैं. एक राजनीतिक है, एक कानूनी है. लेकिन राजनीतिक आयाम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे व्यापक, सबसे अहम है. पहले मैं उसका जिक्र करूं संक्षेप में. पहला बिंदु उसका ये है कि जानबूझकर, बार बार, सोच समझकर, एक सूझे बूझे तरीके से इस सरकार ने हर गणतांत्रिक संस्था को खत्म करने का प्रयत्न किया है, उसको चोक करने का प्रयत्न किया है, उसमें रोकथाम करने का प्रयत्न किया है. सबसे बड़ी संस्था उनके मायने में जो उनके लिए बाधा है वो है स्वतंत्र, निष्पक्ष, निडर बोलना, बोलचाल, जो हमारे संविधान की एक महत्वाकांक्षा ही नहीं, एक मानव अधिकार है, मूलभूत. इस सरकार ने, इस केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्री राहुल गांधी की, सैकड़ों केसेस में 2014 के बाद ऐसे येन केन प्रकारेण कदम उठाए हैं जो हर नागरिक के स्वतंत्र, निडर बोलने के अधिकार क्षेत्र में बाधा डालें, बार बार. और उसके उदाहरण आप जानते हैं. बोलने की स्वतंत्रता और बोलने के बाद की स्वतंत्रता, दोनों को सीधा निचोड़ने का प्रयत्न किया इस सरकार ने बार बार. श्री राहुल गांधी, हम सब जानते हैं, ने निडरता से बार बार संसद के अंदर और संसद के बाहर
अपने विचार रखे हैं, जनहित में रखे हैं, जनता के सामने रखे हैं, जनता के लिए रखे हैं। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विदेश नीति इत्यादि इत्यादि सब मुद्दों पे पूरा बोला है, बिना झिझक के बोला है। और वो आज उसकी कीमत चुका रहे हैं, क्योंकि उनके सवाल, उनके वक्तव्य अच्छे नहीं लगते उन लोगों को जिन्होंने वो गलतियां की हैं, जिसके बारे में विवरण करते हैं श्री राहुल गांधी। कभी डिमोनेटाइजेशन ले लें, कभी चीन को क्लीन चिट का मामला ले लें, कभी जीएसटी ले लें। ये सब मुद्दे वो हैं और इनके अलावा और भी हैं जो इस सरकार को, जिनसे घिन्न है और जो उठाते हैं उनको दंडित करना उनका अनिवार्य रूल है। राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो बोल नहीं सकते। एक झूठे आडंबरी राष्ट्रवाद के आधार पर उनकी आवाज़ को रोका जाता है। एक अजीबोगरीब बनाई हुई बनावटी राष्ट्रवाद का बहाना लेकर उन पे आरोप लगाए जाते हैं। बाहर गए उसके आधार पे जब वापस आते हैं तो कहते हैं कि आप यहाँ नहीं बोल सकते जब तक कि आप माफ़ी नहीं मांगे। यहाँ आते हैं और उस दिन बोलते हैं संसद में, जब माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो सरकार पूछती है आपकी हिम्मत कैसे हुई सब बोलने की, सत्य बोलने की, साफ बोलने की, निडरता से बोलने की। हम आपको प्रिविलेजेस कमेटी भेजते हैं। और सबसे अजीबोगरीब जो मैं समझता हूं, किसी गणतांत्रिक, संसदीय गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक देश में नहीं देखा गया, जब वो आके बोलते हैं तो सरकार खुद अवरुद्ध करती है संसद को। सरकार खुद करती है इस आधार पे कि पहले आप माफ़ी मांगिए। ये कौन सी संसदीय प्रणाली के अंतर्गत है कि पहले आप माफ़ी मांगिए, नहीं तो हम अवरुद्ध करेंगे, नहीं तो संसद चलेगी नहीं। तो ये इसी प्रक्रिया का एक और उदाहरण है, जहां मुंह खोलें, झूठे बेमानी केसेस दायर करिए, डराइए, धमकाइए, और हम आश्वस्त हैं कानूनी प्रक्रिया में कि हम जीतेंगे, स्टे ऑफ कन्विक्शन हमें मिलेगा। लेकिन जहाँ तक सरकार का सवाल है, उन्होंने ये सब प्रयत्न किए हैं, बार बार किए हैं। जहाँ तक कानूनी पक्ष है, मैं बड़े संक्षिप्त रूप में आपको बता दूं, कल बताया था मैंने, थोड़ा उसको और विस्तार से बता दूं, लेकिन संक्षिप्त रूप से, कि जब आप जल्दबाजी करते हैं तो गलतियों के ऊपर गलतियां करते हैं, संवैधानिक और कानूनी गलतियां करते हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देके अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। ये मामला, ये वारदात कोलार कर्नाटक में हुई, 2019 में हुई। उसकी कंप्लेंट कहाँ दर्ज की गई? सूरत, गुजरात में, 1-2 जगह और भी की गई, बिहार में, रांची में। तो जब ऐसा होता है कि वारदात, फौजदारी वारदात कहीं हुई हो अमुक जगह, और फौजदारी वारदात की कंप्लेंट किसी दूसरे प्रदेश में हो, तो कानून विधायिका ने बहुत पहले एक संशोधन द्वारा एक नया प्रावधान बनाया था, कई वर्ष हो गए, जो बाध्य है, जो स्पष्ट है कि जब ऐसा हो तो आपको एक 202 कहते हैं, उसके अंतर्गत एक निरीक्षण परीक्षण करना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, या तो मैजिस्ट्रेट खुद करे या पुलिस द्वारा करे, कि क्या उस मैजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र बनता है। जब तक वो मैजिस्ट्रेट ये शुरुआत में नहीं करता है इंक्वायरी, तब तक वो कंप्लेंट से आगे नहीं बढ़ सकता। रोचक बात यह है कि ये मुद्दा स्पष्ट रूप से इस श्री राहुल गांधी केस में उठाया गया, जजमेंट में लिखा है, लेकिन निर्णित कहीं नहीं है। ये इंक्वायरी कहीं नहीं हुई गुजरात मैजिस्ट्रेट द्वारा, यद्यपि ये मामला आया है कोलार कर्नाटक से। ये एक उदाहरण है कई और अहम मुद्दों का के साथ। एक दूसरा उदाहरण, और आप अपनी आप कंक्लूजन लगा सकते हैं, जो मैं आपको 3 तारीखें देना चाहता हूँ। एक विचित्र बात हुई, जो याचक है, इसमें कंप्लेनेंट है, वो अप्रैल में 2019 में कंप्लेंट फाइल करता है। 2021 जून में श्री राहुल गांधी उस मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं जो सूरत का मैजिस्ट्रेट था, उस वक्त एक मिस्टर दवे थे। 1 साल तक रुकने के बाद याचक वापस एक अर्जी देता है कि श्री राहुल गांधी वापस पेश हो।
जब मार्च 2022 यानी पिछले वर्ष वो दूसरी याचिका बार बार उनको बुलाकर तंग करने की प्रक्रिया पे मैजिस्ट्रेट वो खारिज कर देता है, तो याचक कंप्लेनेंट हाई कोर्ट जाता है और अपनी कंप्लेंट का खुद एक स्टे ले लेता है, अपनी कंप्लेंट का खुद स्टे कि ये आगे नहीं चलेगी। 1 साल तक वो पड़ी हुई है, 11 महीने से उसका कुछ नहीं करता है, सब कुछ ठीक है उसके लिए। अचानक वो वापस जाके फरवरी इस वर्ष फरवरी में यानी पिछले महीने हाईकोर्ट को कहता है कि साहब अब काफ़ी एविडेंस आ गई है, अब मैं अपनी खुद का स्टे को वापस लेना चाहता हूँ, स्टे को आप निरस्त कर दीजिए, यानी स्टे को स्टे कर दीजिए, स्टे को हटा दीजिए। हाईकोर्ट करता है और वापस जाके मैजिस्ट्रेट जो अभी तक बदल गया है, एक नया निर्णय आ जाता है जो अभी कल आया। आप अपने आप चित भी अपनी पट भी अपनी, अपने आप लकीरों के बीच क्या हो रहा है समझ सकते हैं, संज्ञान कर सकते हैं। मैं अंत में ये कहूँगा, श्री राहुल गांधी की आवाज़ इतना आसान नहीं है दबाना, कांग्रेस की आवाज़ इतना आसान नहीं है दबाना। आप देख रहे हैं कल से आज और आगे चलेगा एक अभियान, एक विरोध,